Hello students, today we are on chapter 8 and chapter 8 we will study about forests and wildlife. Forests are an important gift of nature. Ideally, one third, 33% of the total area of a country should be under forest area. At present, only about 20% of India is covered with forest, and that is not enough. Forests are very useful to us and they give us things such as pure air, wood, herbs, fruits, gum, and meditational plants. Woods from trees are also used to make many things. They provide shelter to animals, and forests also help to prevent floods and soil erosion. They attract rainfall and keep the places cool. हमारे देश में बहुत तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वो वाले फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं और अपने लीव्स को वो कभी भी शेड नहीं कर सकते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? रेनी स्लोप्स पर, और एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये वाले पेड़ टॉल होते हैं और उनकी कैनोपी जो होती है वो काफी ब्रॉड होती है एट द टॉप। दे प्रोवाइड अस हार्डवुड दैट इज वेरी यूजफुल। द मेन evergreen trees are rosewood, mahogany, and ebony. These forests have a thick undergrowth of bushes and plants. The next forest that we have in our country is deciduous forest. ये उनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है और वो हिमालयस के फुटहिल्स पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सदर्न प्लेटो के वेटर पार्ट्स है वहां पर भी इनको हम देख सकते हैं। इंडिया में ज्यादा एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट दे शेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एंड द वुड ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी गुड फॉर फर्नीचर। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा में टीक एंड साल आर द मेन ट्रीज दैट आर फाउंड इन दीज एरियाज। और कुछ और कॉमन ट्रीज जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं वो है शीशम, सैंडलवुड, महुआ, सामुल और बैम्बू। उसके बाद है कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिनको हम माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टॉल और उनके पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स होते हैं। वो उनको कोन भी हम बोल सकते हैं। इन ट्रीज के जो वुड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनके पल्प से पेपर और पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हायर रीजन्स ऑफ हिमालयाज और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं और जो पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम है चीर, देवदार, फाइन, fir, pine, and spruce. Then we have thorny forest, which are mainly found in Rajasthan. A few trees along with bushes are common. The trees and shrubs of this forest have long roots, thick bark, and small leaves and sharp thorns. These trees can survive without water for a very long time, and the long roots of these trees help them to obtain water from deep within the earth. Babool and kikar are the main trees of these areas. Next we have mangrove forest. These forests are known as tidal forest and are found in the delta of rivers and area which are covered by sea water. ये salty water और fresh water दोनों में पाए जाते हैं। Brahmaputra, the region of Ganga and Brahmaputra is covered by mangrove forest, and a tree called Sundari, a type of mangrove, grows in the Ganga delta. Its wood is used for making boats. It is after this tree that the region is known as Sundarbans. It is very important कि हम forest को conserve करें, जो कि हम अगले next portion में पढ़ रहे हैं। A country should have 1/3 of its area covered under forest, लेकिन currently India में ऐसा नहीं है। Just 20% of the Indian land is covered by forest. इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम forest का संरक्षण करें। आए दिन ट्रीज काटे जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। We must take steps to grow more trees and conserve our forest. 1970 में a group of female peasants in the Raini village of Uttarakhand prevented tree cutting in their areas by putting their arms around the trees. This was the beginning of the Chipko movement. Chipko means to embrace. The villagers hugged the trees to protect them. उन्होंने ट्रीज को लिटरली हग कर लिया कि नहीं, हम इनको काटने नहीं देंगे।
This movement is spread all over the Garhwal Himalayas and Uttarakhand in 1980 and stopped the rapid deforestation that was taking place in that area. Sundarlal Bahuguna was one of the leaders of the movement and made sure that the government passed many laws to stop the cutting of the trees. Then we will study about wildlife. इन जंगलों में तरह तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं और जिनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, rhinoceros and lions. First week of October is celebrated as Wildlife Week in India. Wild animals are facing the danger of extinction और उसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है. Hunting, poaching and cutting of trees, these are things that has to be stopped immediately. And our government has taken various steps to preserve wildlife. अगले इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग वाइल्ड लाइफ पार्क्स के हमारे पास पूरी लिस्ट है और कहाँ पे ये किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, that is also given out over here. So what are the points that we need to remember in this chapter? At least 1/3 of land area of a country should be covered in forest. Softwood is used for making pulp and packing cases. Chipko movement was a major step towards conservation of trees and forest in the hilly region, and wild animals live in the forest, and it is also important to take care of the wild animals, and ये बहुत ज़रूरी है कि उनका संरक्षण भी हो. I hope you enjoyed the chapter with a lot of learning, and I will see you in the next chapter. Till then, have a very good day. Goodbye.